So the tenesmus, which also indicate patient आके बोलेगा मुझे colic की पेन होता है. That is the indication of ulcerative colitis, guys. आकड़ी आती है. पेशेंट आके बोलेगा मुझे आकड़ी आ रही है. इंटेस्टाइन आर ट्विस्टिंग. कौन सी मेडिसिन है? पेशेंट आके बोलेगा कि मुझे पेट में दर्द हो रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि इंटेस्टाइन आर ट्विस्टिंग. एनीवन? एनीवन? इंटेस्टाइन आर ट्विस्टिंग. या फिर स्टैबिंग किया हो और अंदर कोई ऐसे गोल घुमा रहा हो ऐसा लगता है, या अंदर से कुछ खींच रहा हो ऐसा लगता है. These are the sensations of diascoria. Diascoria is one of the good remedy for abdominal colic. When you get the modality, it works. But even though when you don't get modality, you can think of remedy with this sensation. It is also specific remedy for gallstone. And pain is shifting from one part to another part. Is it mentioned in diascoria? Can anyone get that symptom? सर अभी जो आपने सारे सिम्टम्स बताए हैं, तो पेशेंट क्या लोकल लैंग्वेज में उसको ऐसे बोल सकता है कि मुझे पेट में मरोड़ हो रही है? हाँ, that is the twisting pain. And the specific remedy is diascoria. मुझे मरोड़ हो रही है, आकड़ी आ रही है, पेशेंट ऐसा बोलेगा. The remedy is diascoria. Even मैक्फोज is one of the good remedy. लेकिन जो आकड़ी आती है, मरोड़ आती है, we can think of diascoria. That might be mentioned in some keynote or somewhere. I'm not getting right now. पाठक में तो नहीं है. So in boric, gripping, cutting in hypogastric region with intermittent cutting in stomach and small intestine. Colic better by walking about. Pains radiate from abdomen to back, chest, arms, worse bending forward and while lying. Sharp pains from liver, shooting upward to right nipple. Pain from gallbladder to chest, back and arms. Renal colic with pain in extremities. Hurried desire for stool. Yes. The such symptom which I was talking about, that is mentioned in keynote. Violent twisting colic occurring in regular paroxysm, as if intestine were grasped and twisted by powerful hand. कोई मेरे intestine घुमा रहा है या वो twist कर रहा है. That kind of sensation is seen in diascoria, which is very common in ulcerative colitis or Crohn's disease or IBD, inflammatory bowel disease, जिसके अंदर these are the common symptoms. Pediatric patient के अंदर when you get the psychiatric pain, बच्चों के अंदर if there is no pathological changes and there is psychiatric cause, you can think of diascoria. Twisting type of pain and the cause is psychiatric, think of diascoria. Yes, we were talking about leg depth. These are the common remedies that helps a lot for constipation. Even Cilicia is also there with the typical headache and constipation, with the typical perspiration on palm and sore. We can think of this remedy. Elimina is there. We already discussed. His soft stool required great straining. Think of Elimina. Yes, these are the common remedies for constipation.
Now vomiting में कौन सी मेडिसिन आप यूज करोगे in pediatric cases, guys? What are the common remedies prescribed for vomiting in pediatric cases? सर नक्सोमिका। नक्स वोमिका का कॉन्स्टिपेशन तो भूल गए हम। कैसा होता है नक्स वोमिका का कॉन्स्टिपेशन? एनीवन? Incomplete and unsatisfied. मतलब यासी का मतलब Ineffectual urge. Uh, Ineffectual urge. इनफेक्चुअल अर्ज, मतलब पेरेंट्स आके बोलेंगे कि मतलब मेरे बच्चे को स्टूल पास करने के बाद भी उसको ऐसा लगता है कि अभी भी और स्टूल पास करने की इच्छा उसमें रहती है। ओके, तो दैट इज कंसिडर्ड इज अ कॉन्स्टिपेशन और डायरिया? इन कॉन्स्टिपेशन सर। सॉरी, दैट इज कॉन्स्टिपेशन और डायरिया? Sir, constipation and constipation alternate diarrhea. Okay, see, constipation alternate with diarrhea, that is antium crude. या इसमें भी हो सकता है, लेकिन दैट वी कैन कंसिडर इन कॉन्स्टिपेशन। बहुत सारे पेरेंट्स आके आएंगे मेरे बच्चे को कॉन्स्टिपेशन है या मुझे कॉन्स्टिपेशन है। व्हेन पेशेंट इज टेलिंग यू कि मुझे कॉन्स्टिपेशन है, ऑलवेज आस्क अबाउट द फ्रीक्वेंसी, तो ही आप नक्स वोमिका प्रिस्क्राइब कर पाओगे, अदरवाइज यू विल नॉट एबल टू प्रिस्क्राइब नक्स वोमिका, एंड ऑल्दो यू प्रिस्क्राइब यू विल नॉट गेट रिजल्ट। यस मरियम, कांस्टेंट डिजायर फॉर स्टूल होती है, एज यू ऑल टेल कि भाई डिजायर होती है और वापस जाने की इच्छा होती है। तो जब भी कॉन्स्टिपेशन वाले पेशेंट आते हैं तो उसको पूछो आपको कॉन्स्टिपेशन में होता क्या है। कॉन्स्टिपेशन में एक दिन स्किप हो जाता है, जोर करना पड़ता है, या 3-4 बार जाओ और सेटिस्फैक्टरी स्टूल नहीं हो रहा है, दैट इज द नक्स वोमिका। पेशेंट 2 या 3 बार जाता है और ऑल्दो ही और शी इज नॉट गेटिंग रिलीफ, दैट इज नक्स वोमिका। स्पेशली नक्स वोमिका 2 या 3 बार जाता है, स्पेशली इन मॉर्निंग, नॉट इन ऑल डे। मॉर्निंग में ही 3-4 बार जाना पड़ता है, मेरा पूरा दिन बिगड़ता है। मैं मॉर्निंग में स्टूल की वजह से ऑफिस जाने में लेट होता हूँ, दैट इज नक्स वोमिका। हैविंग दैट आउटसाइड फूड खाने की हैबिट एंड स्मोकिंग एंड टोबैको along with their fastidiousness, think of nux vomica. Yes, we were in vomiting. नक्स वोमिका की वॉमिटिंग कैसी होती है? Anyone? He feels that if he will vomit, he will feel better. Yes, that is the feeling. See, नक्स वोमिका ऐसा फील करेगा, जो मैं वॉमिट करूंगा तो ही मुझे अच्छा लगेगा, लेकिन वॉमिटिंग डज नॉट गिव रिलीफ टू नक्स वोमिका पेशेंट। दैट इज द सेंसेशन कि मैं उल्टी करूंगा, वो जानबूझ के उल्टी भी करता है लेकिन उसको रिलीफ नहीं मिलता है, दैट इज नक्स वोमिका। कॉफी ड्रिंकर्स, कॉफी की वजह से वॉमिटिंग और गैस्ट्राइटिस हो रहा है, थिंक ऑफ नक्स वोमिका। स्मोकिंग की वजह से कॉन्स्टिपेशन या वॉमिटिंग हो रहा है या गैस्ट्राइटिस हो रही है, गैस्ट्राइटिस का वन ऑफ द कॉज इज स्मोकिंग। टॉबैको नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट स्मोकिंग। इनहेल करने से भी एसिडिटी हो सकती है। टॉबैको चूइंग इज द कॉज, लेकिन स्मोकिंग इज वन ऑफ द कॉज। तो उसकी वजह से जब भी वोमिटिंग हो रही है, थिंक ऑफ नक्स वोमिका। डिस्पेप्सिया फ्रॉम ड्रिंकिंग स्ट्रॉन्ग कॉफी, दिन में 4 बार कॉफी पीते हैं। नाउअडेज कॉफी कल्चर इज वेरी कॉमन। गुजरात में पीपल आर टेकिंग टी मोर, लेकिन ड्यू टू शो ऑफ पीपल आर ड्रिंकिंग कॉफी, और उसकी वजह से व्हेन पेशेंट गेटिंग डिस्पेप्सिया और गैस्ट्राइटिस, थिंक ऑफ नक्स वोमिका। वांट टू वॉमिट बट कैन नॉट, वो उल्टी करना चाहता है लेकिन उल्टी होती नहीं। Even nux vomica is one of the good remedy for nasal blockage, snuffling, snuffed up nose,
we discussed in respiratory or not, I am not remember, but this is the specific remedy. Patient ऐसा करता रहता है. See, this is the snuffle. This is the snuffed nose. Blowing the nose, constantly blowing the nose. That is also Naxwamika. Vomiting के लिए any other remedy? Ipecac. Ipecac is the leading remedy. What are the indication of Ipecac? You all know Ipecac indication. Is it required to discuss Ipecac? क्या indication है फटाफट? Anyone? Constant nausea not relieved by vomiting. Okay. और उसके साथ क्या होना चाहिए? Tongue is clean. Sorry? Clean tongue. Clean tongue, yes. Clean tongue with With much saliva. Clean tongue with saliva with Much. Mouth is Thirstlessness. moist. with thirstlessness. ये सब मिले, then you can think of Ipecac. Another remedy, that is bismuth. Any one of you using bismuth for in your practice for vomiting? I am using bismuth when my Ipecac fails, when my Naxwamika fails, when my Carbovage fails. In those cases, I am using bismuth. क्या इंडिकेशन है गाइस बिस्मथ का? सर पानी पीते ही वॉमिट हो जाती है. एग्जैक्टली. जैसे ही बच्चा पानी पीता है, he or she vomits out. जैसे ही एडल्ट पानी पीते हैं, vomit out. That is the indication of bismuth. जैसे ही स्टमक के अंदर पानी गया, it came out. That is the indication of bismuth. Vomits with convulsive gagging and pain. Water is vomited as soon as it reaches to stomach. Eructations after drinking. Vomiting all fluids. Burning feeling and loud. Will eat for several days. Then vomit. मतलब guys, will eat for several days, then vomit. Slow digestion. हाँ जी, बोलो मतलब उसको बहुत पुराना खाया हुआ खाना भी वॉमिट होता है, इतना Exactly. प्यूरिफाई हो जाता है. पेशेंट ऐसा बोलेगा कि 3 दिन पहले मैंने वो बर्गर खाया था, उसके अंदर एक ककड़ी आई थी, and that ककड़ी came out today in vomiting. That is bismuth. Gastritis better by cold drink like phosphorus, but vomiting when stomachs become full. Another remedy you can think of in same condition, that is phosphorus. As soon as it becomes warm, it vomits out. Yes, Sultana, anything, water or food. Lekin water is liquid, is more specific according to theory. But we can think in anything. Another remedy, that is Carbovage. Another remedy, that is Ecthusa, we all know from indigestion of milk in pediatric patient during the time of dentition phase. Ecthusa is remedy. For vomiting, curdle-like vomiting, think of Ecthusa. Curdle-like diarrhea or milk indigestion causes diarrhea, think of Ecthusa. Carbovage is always there along with vomiting. There is distension of abdomen or constant eructation. In those cases, think of Carbovage. In
pediatric patient, when bacha is telling you can need fan which require fast fanning, air hunger, think of cardiology. Colic pain we already discussed. Colocin, diascoria, even synapse nigra. Indication of synapse nigra abdominal pain. Erect position. Yes. Erect position क्या है? Colic ameliorated Pain relieved by by erect sitting. position. Yeah, sitting gives amelioration or standing still gives amelioration. That is synapse nigra. Arsenical, when बच्चा came to you, pediatric patient के अंदर diarrhea after eating outside food or food poisoning, we are prescribing arsenical 200, 4 pills in water potency. एक चाय के कप के अंदर 4 गोली डाल दो और पानी एक एक चमची पिलाते रहो every hourly. It works. It definitely works. Patient के डायरिया शाम तक मिट जाएंगे. Whatever it may be the age. Food poisoning, outside food खाने के बाद when patient came to you on Monday or patient came give a call on Sunday after eating Saturday night, think of arsenical. If I'm not wrong, diarrhea after melons, the remedy is arsenical and another remedy is zincum mat. मतलब watermelon खा लिया, melons खा लिया और उसके बाद डायरिया हुआ है, स्पेशली इन समर जो आउटसाइड वाटरमेलन मिलता है वो खा लिया और डायरिया होगा. थिंक ऑफ आर्सेनिकल एंड थिंक ऑफ जिंकम मैट. These are the common remedies that helps in pediatric patient. When you prescribe, it works. Sir, gingiber is also indicated after eating melon. Sorry, Priyanka. Gingiber. Gingiber. क्या इंडिकेशन है? आई एम नॉट यूजिंग जिंजिबर. Complain after eating melon and impure water. Okay, gingiber is there. Okay. Spell out करो gingiber. Zingiber, made up from ginger. VIN. Zingiber. ZIN. Z. Z, yes, Z. वो संडे किसने बताया था सन एक्सपोजर में म्यूरेटिक एसिड? सर मैंने ही बताया था. I used today. Let's see. It is working on it. Okay, sir. Gingiber is mentioned in my book. Last remedy. Okay. सर ये लास्ट रेमेडी है इसलिए मैंने मतलब पढ़ी थी तो याद है मुझे. This is the last remedy of material medica book. मैंने कभी पढ़ी नहीं. I have never used this remedy. Complaints from eating melons. Yes, that is also mentioned in gingiber. Acidity के लिए भी that is one of the good remedy. Yes, acidity के लिए remedies are Robinia. Robinia is equal to rabiprazole. Even in pediatric patient, when patient having gas in stomach, think of natrum for 6x. We are giving natrum for 6x for gas trouble. When bachcha having colic, we are giving metformin in 6x. Sir, can you please repeat? Natrum for gas trouble. How will you differentiate gas trouble from colic? Gas trouble में what is happening? बच्चा बोलता है मम्मा को कंप्लेन करता है कि मुझे पेट में दर्द हुआ है और 5 मिनट के बाद भूल जाता है. वो कुछ और चीज में इन्वॉल्व हो जाता है तो वो भूल जाता है. That is the थोड़े थोड़े टाइम के पेट में दर्द होता है फिर चला जाता है. That pain is not that much intense. See, this is the season in which बच्चे having maximum gas trouble.
ये रेनी वेदर के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम इज गेटिंग वर्स एंड उसकी वजह से गैस फॉर्मेशन इज वेरी कॉमन इन पीडियाट्रिक पेशेंट. In those cases, you can think of natrum phos. When the colic is there, but is not able to tolerate it, वो बहुत intense होता है colic. थोड़े टाइम में colic होके चला जाता है, होता है चला जाता है. Think of phos. अच्छा रो लेता है, उतना intense pain होता है.